Namaskar, sir. I'm Minister for Communications, Electronics and IT, and Railways, Shri Ashwani Vaishnav as our Chief Guest. I will request Shri Ninamura, Member Services, to welcome him with a plant. And I will request everyone to welcome him with a round of loud applause. Thank you, sir, for giving us your precious time. Today, on the occasion of inauguration of the GatiShakti Sanchar Portal, we also have Chief Secretaries, IT Secretaries and other senior officers. Link. A very good morning to all of you and warm welcome. In past few months, your cooperation has been immense in integrating this portal with the state portals. Shri Harvesh Bhatia, Director General Telecom, and Shri V.L. Kantarao, Additional Secretary Telecom, Shri Nand Kumaram, Managing Director, MP State Electronics Development Corporation. Good morning to you, sir, and warm welcome. We also have various telecom service providers, infrastructure providers, and telecom associations like COAI, DIPA, ISPI, who apply for right-of-way approvals, and they are joining from this conference also. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to this magnificently glorious day, bringing liberty in your lives. They will be using this portal as seeker of ROW permissions, and they have been important partners during the development of this portal by giving valuable feedback from time to time. Senior DOT officers of Sanchar Bhavan and DOT LSA officers who are joining from across the country, a very good morning to all of you. Ladies and gentlemen, we are now going to start the inaugural function of launch of GatiShakti Sanchar Portal by welcoming our Chief Guest, Honorable Minister Shri Ashwani Vaishnav ji, and for this, I will now invite respected Shri V.L. Kantarao, Additional Secretary Telecom, to give the welcome address. Thank you. Honorable Minister for Communications, Electronics and IT, and Railways, Shri Ashwani Vaishnav, Chief Secretaries of States and Administrators of Union Territories who have joined us online, and we have the creator of this portal, MP SADC, with us. We have member services, member finance, DGT, and other senior officials of Department of Telecom. And we especially have several leaders of the industry associations who are present today. Media, colleagues, ladies and gentlemen. This is indeed a proud day for Department of Telecom to have the Gati Sanchar Portal launched by Honorable Minister today. And it is an honor for me to welcome all of you for this program. The Gati Sanchar Portal, as you will come to know, GatiShakti Sanchar Portal, as you know, was earlier actually a Saral Sanchar Portal, and Minister has added GatiShakti to it. So it is now a GatiShakti Sanchar Portal. And it is an online platform for all industry players to apply for right-of-way for creating telecom infrastructure in the field. This work was being done earlier in separate ways by states and central government. Now this is a unified, integrated, centralized portal which covers all the states, all the 36 states and union territories, and the central government ministries as well. This is a big step in the ease of doing business for the industry that has been created by us. In fact, since the launch of National Broadband Mission, the work on the integrated portal started about a year back, and we had
different state methods of giving approvals, different payment methods, and states have different types of technologies, which all have to be brought onto one single platform. And it was a slightly complicated task, but thanks to a lot of efforts both by the industry and the department, with a lot of cooperation with the state governments, that we have been able to reach today a single integrated centralized right-of-way portal called GatiShakti Sanchar Portal for everyone to now apply at one place on one click of a button. Sir, as you are aware, National Broadband Mission was launched in 2019, December, and we have worked to achieve the goals of broadband for all with all the state governments by first of all making the state governments align their right-of-way rules and procedures to the right-of-way rules of Government of India. Government of India launched an ease of doing business-based right-of rules in 2016, and now we can proudly say that 32 states and union territories have aligned their right-of-way rules in tune with the Government of India rules. There are 3-4 states left which we are working on and will shortly complete that task as well. Sir, the advantage of this has been that in the last 1.5 years, the right-of-way applications which have been pending with states and central government ministries have come down from 71,000 to 36,000. They have become half. Thanks to, sir, your efforts, your push. In fact, sir, I want to tell you that the very fact that you said that you are going to launch this portal, Bihar state has reduced the number of pendency from 20,000 to 8,000 in the last 1 week. So, thank you very much, sir. I think that's a big boost to the industry on the clearance of the applications. In fact, the average time taken for clearance of applications by the states has come down for something like 100 days a few years back to 22 days, which is the latest figure the industry has given us today. And so this 22 days is well within the 60 days timeline which is given in the rules. Sir, this launch of the portal being done by you today, sir, has a very long-term impact in the way telecom infrastructure is going to be created and utilized in the country. Sir, first of all, the government has announced that 5G services will be rolled out this year, and the auction is going to take place shortly and the rollout will happen. Sir, for rolling out 5G, right-of-way clearances is absolutely essential, because fiberization is an important part of 5G rollout, and the number of radios, BTS that are going to increase while rolling out 5G will require faster approvals and more approvals. And this portal, sir, will ensure that we monitor on a day-to-day basis, and states can also see, the private sector can see, and every stakeholder can see as to how quickly the states are ensuring that the 5G rollout is happening in their states through this ROW portal. Sir, with your launch, we also seek your guidance in the next steps for improving this portal, sir. So this portal is in a way beginning of a good story, but we need to make it more technologically savvy and useful by adding a few features. So, for example, the portal requires a lot of government process re-engineering to be done by the states and the central government ministries, because if you see the number of documents sought by state government or the number of levels of approval state government, it varies from state to state. So we need to standardize that. We need to encourage states in making them do BPR within the state government. The process re-engineering
should happen so that things become smoother, sir. And I will request you to make this request to the state governments when you address them. Second thing, sir, is that since the number of points where infrastructure will be created in the field during 5G rollout is going to increase immensely, a lot of GIS aspects will come into play. If the online applicant, if the industry applicant can know through this system as to where electric poles are available, where smart city street furniture is available, and can click there and then apply there itself instead of going to the field, then that will actually shorten the time for application and also clearance. And many states have GIS infrastructure already available. In fact, Madhya Pradesh officer who is present here, he told me that there are 43 layers of information already available in the GIS of Madhya Pradesh. Similarly, in Gujarat, they have a very good GIS portal. So integration of the GIS portal of the state with our portal will ensure that the industry applicants can easily apply on the basis of a click of a button. So, sir, with this, I welcome you once again, sir, and I request you to give us a guidance on how we take this launch forward. Thank you very much. Thank you, sir. Your breakneck speed and working and quick follow-up with the states gives the broadband mission a new direction and energy. I would like to inform that in the last minute, Honorable Minister of State for Communications had to travel outside Delhi and we are missing his presence. So now we move on to our main item of inauguration of the GatiShakti Sanchar Portal. The inauguration will be followed by playing of a short video film about the GatiShakti Sanchar Portal. For this, I will request Honorable Minister to inaugurate the GatiShakti Sanchar Portal by pressing the button. In line with the PM GatiShakti National Master Plan, Department of Telecommunication is launching GatiShakti Sanchar Portal to facilitate smooth deployment of digital communications infrastructure across the country. To achieve broadband for all, it is necessary to lay optical fiber cable and install mobile towers, for which the telecom service providers and infrastructure providers need quick right-of-way permissions from the government. Delays used to happen in clearance of physical applications of right-of-way due to inconsistency in policy and processes in various states and union territories. To streamline the process and for faster clearance of right-of-way applications with transparency, accountability, better responsiveness, and effective monitoring of pendency, the GatiShakti Sanchar Portal was envisaged so that the telecom service providers and infrastructure providers may apply for right-of-way approvals to lay down optical fiber cable, erect mobile towers, and for 5G rollout at one common single web portal. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. DoT, along with 36 states and union territories, is launching the GatiShakti Sanchar Portal, a robust mechanism to achieve the goal of broadband for all. The portal will bring an array of advantages to the central and state union territory government bodies. 1. Government bodies will be able to approve the right-of-way applications well within the prescribed time limit of 60 days. 2. Best practices about phase structure, required documents, and processes can be implemented across states with process re-engineering. And 3. Optical fiber provides more backhaul connectivity compared to microwave links. Thus, fiberization of towers
will lead to better broadband speed. To enable effective monitoring at top government level, the portal comes fitted with a potent dashboard, which gives state-wise and district-wise pendency status of right-of-way applications. In many states and union territories, state right-of-way policy alignment has been done with central right-of-way policy like deemed approval. Fee also has been rationalized and payment has become online. Rules and procedures have been simplified. Reduction of documents. Thus, the GatiShakti Sanchar Portal is bringing ease of doing business in line with the commitment of the Government of India. The portal has been developed by MP State Electronics Development Corporation on behalf of Department of Telecommunication. ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। Ultimately, with better broadband connectivity, citizens even in the farthest corners of the country will be able to easily access government services, search for information online, buy and sell produce, and undertake cashless transactions. My colleague officers, colleagues from the industry, friends from all the state governments, friends from media. All of you are aware that Honorable Prime Minister launched the GatiShakti framework a few months back. What is this framework? This framework is basically for integrated planning, integrated execution of all infrastructure services. What are these infrastructure services? Whether it is highways, railways, waterways, cable, electricity, transmission lines, can we think of all these services as one integrated infrastructure package instead of thinking of different things at different points of time? जैसे एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है और अच्छा एग्जाम्पल है, सड़क बनी, थोड़े दिन बाद में उसको काटने के लिए केबल वाले आ जाते हैं, केबल वालों ने काट के उसको ठीक किया और उसके बाद में पाइप वाले आ जाते हैं पानी की सप्लाई के लिए, फिर बिजली वाले आ जाते हैं। तो जो सड़क बनी उसकी हालत 4-5 महीने में वापस वैसी की वैसी। तो इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने के लिए पहला तो माइंडसेट में चेंज, दूसरा टेक्नोलॉजी का यूज। ये दो चीजें। माइंडसेट में क्या चेंज? माइंडसेट में ये चेंज कि हमें अपने सोच में ये बदलाव लाना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने प्लानिंग प्रोसेस में, कि भाई किसको कहाँ किस चीज की जरूरत पड़ सकती है पहले से सोच लें, सबसे बातचीत कर लें, बातचीत करके wherever we can solve, try to resolve. ये थॉट प्रोसेस में। टेक्नोलॉजी में कोई कॉमन पोर्टल्स बने, कॉमन रूल्स बने, जितना हो सके GIS मैपिंग हो। तो इसके रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं, मैं आपको 2-3 रिजल्ट्स बताता हूँ। रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क को जैसे ही गतिशक्ति पोर्टल पर डाला और शिपिंग मिनिस्ट्री ने अपने सारे पोर्ट्स को गतिशक्ति पोर्टल पर डाला। अब ये एक ही पोर्टल पे जब दोनों चीजें एक साथ आई, इतनी क्लियर विजिबिलिटी दिखी कि करीब करीब 60 पोर्ट ऐसे हैं जिसकी रेलवे की कनेक्टिविटी बड़ी आसानी से की जा सकती है। कोई 8 किलोमीटर दूर है, कोई 12 किलोमीटर दूर है, कोई 7 किलोमीटर दूर है, कुछ ऐसे पोर्ट्स भी हैं जो मात्र 5-6 किलोमीटर दूर है। तो उतनी सी कनेक्टिविटी अगर हो जाती है तो देश में एक अलग ही इकोनॉमी में, एक उस पोर्ट की इकोनॉमी में, रेलवे की इकोनॉमी में दोनों का बेनिफिट होता है, उस एरिया के लोगों को बेनिफिट होता है। इसी तरह से जब फाइबर की बात है, ऑप्टिकल फाइबर की, जब रेलवे लाइन सब जगह जा रही है, हाईवे देश भर में लंबा चौड़ा नेटवर्क है, क्यों ना इसके अलोंग पहले से ही केबल डक्ट्स बना दी जाए, पहले से ही ट्रेंचिंग करके उसमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसमें हाईवे ने काम चालू किया,
और हाईवे के साथ ही साथ केबल ट्रेंच चालू की। रेलवे का ऑलरेडी 65,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, उसमें केबल ट्रेंच बनी हुई है क्योंकि रेलटेल का केबल लगा हुआ है। तो अब उस केबल को, उसी ट्रेंच को भारत नेट के लिए भी यूज कर लो और कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अगर यूज करना चाहे तो वो भी यूज कर ले। ये सोच है, ये थॉट प्रोसेस है जो कि गति शक्ति। ये प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि भाई अपने इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कुछ भी कॉमन है उसको क्यों ना एक बार सोच समझ के एक ही बार में कर लिया जाए। इसी थॉट प्रोसेस के साथ आज ये गति शक्ति संचार पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार। तो सबसे विशेष धन्यवाद राज्य सरकारों को कि राज्य सरकारों ने और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मिलके जो राइट ऑफ वे के रूल्स थे उसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत सारे प्रोसेसेस में सिंप्लीफिकेशन किया, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में अपने अपने रूल्स को रिवाइज करके उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन किया और सबने मिलके ये पोर्टल बनाया। ये कोई भारत सरकार का बनाया हुआ पोर्टल नहीं समझना है अपने को, ये भारत सरकार, राज्य सरकार और अब इसमें रेलवे जुड़ेगा, हाईवे जुड़ेगा, वाटरवेज जुड़ेंगे, कैनाल इरिगेशन वाले जुड़ेंगे क्योंकि कैनाल इरिगेशन एक लीनियर पैच अवेलेबल है तो आप बड़े आराम से उसके साथ साथ केबल लगाया जा सकता है। तो राइट ऑफ वे अवेलेबल है पावर ग्रिड को, तो पावर ग्रिड के साथ ही साथ उसी राइट ऑफ वे में केबल भी लगाया जा सकता है। इन सब को जोड़ के फिर बाईसैक का जो GIS प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, गतिशक्ति का जो पोर्टल बन रहा है उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आज 100 दिन एवरेज परमिशन गति की वो आज 22 दिन में आया है। 100 दिन से 22 दिन में आने में माइंडसेट का काम ज्यादा था, अब टेक्नोलॉजी का काम ज्यादा जब आएगा तो ये 22 दिन और फास्ट हो जाएगा। सो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये इसको फर्स्ट स्टेप मानिए। ये राज्य सरकारों के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उपस्थित सभी लोग, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए गिव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं राज्य जब डेवलप होंगे तो भारत तो अपना डेवलप हुआ, तो राज्य सरकारों के लिए विशेष इसमें एप्रिसिएशन है, विशेष क्रेडिट है और इसी पॉलिसी को, इसी फिलॉसफी को, इसी थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाएं, सब साथ मिले। अब आगे भविष्य में हमें 2 और काम बड़े करने की जरूरत है। एक, लीगल प्रोविजंस, लीगल बैकिंग राइट ऑफ वे के लिए देने की जरूरत है। अभी जो राइट ऑफ वे रूल्स बने वो रूल्स बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से बने, उसकी लीगल बैकिंग अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकिंग जो चाहिए वो चाहिए, उसको नेक्स्ट स्टेप में देने के लिए हमें काम करना है। दूसरा, जितने भी पोर्टल्स हैं, स्पेशली गतिशक्ति पोर्टल, रेलवे के पोर्टल, हाईवे के पोर्टल, इन सब पोर्टल्स का भी आपस में इंटीग्रेशन, ये 2 बेसिकली टेक्नोलॉजी और लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इस पे अब काम करेंगे और मुझे आशा नहीं विश्वास है कि जिस माइंडसेट के साथ, जिस सिंसियरिटी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है उसमें हमारे देश को, देश के हर कोने कोने में जो हमारी अंत्योदय की फिलॉसफी है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए, लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी में सबको बहुत इस प्रयास से लाभ होगा, अच्छी सर्विस मिलेगी और जल्दी काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Telecom companies are short of cash and their cash flow should improve. Sir, today's launch of GatiShakti portal is also a step in that direction as it will reduce the cost of doing businesses for the telecom companies. So now we come to the end of the program and I will request Shri Harvesh Bhatia, Sir, Director General Telecom, to offer vote of thanks. Honorable Minister of Communications, Electronics and IT and Railways, Shri Ashwini Vaishnavi,
Member Services Digital Communication, Shri Nizamullah, Chief Secretaries and Senior Officers of all the 36 states and Union Territories, Additional Secretary Telecom, Shri D.L. Kantarao, representatives from TAIPA, COAI, Telecom Service Providers and Infrastructure Providers, colleagues and senior officers from various units of DOT, representatives of media, ladies and gentlemen. I take this opportunity to thank everyone present here physically and also through online, and those associated with development, operationalization and launch of this versatile portal, which is a unique endeavor of the central government undertaken in synergy with the state and UT governments towards achieving the goal of ease of doing business. The portal shall provide both the Gati and the Shakti required in respect of numerous telecommunication infra projects in the country, as per the vision of Honorable Prime Minister. I would like to stress that this is a unique project which has been done by the central government in synergy with the state governments and union territories and all the stakeholders for the optical fiber laying and the towers. On behalf of Department of Telecommunication, I express my gratitude to the Honorable Minister of Communications for his kind presence and very inspiring address. It has been our fortune to find distinguished presence of our extremely busy person in most of our endeavors to improve broadband connectivity in the country. I thank Honorable Minister for being amidst us at a very crucial juncture in the telecom industry when 5G is round the corner and he has many preoccupations. In organizing this hybrid conference, we acknowledge the stewardship of the Honorable Minister of State for Communication, Shri Devi Singh Chauhan ji. I am thankful to Secretary Telecom, Shri K. Rajaraman, who guided us at every step, gave suggestions to improve the look and feel of the portal, and took pains to have several meetings with the Chief Secretaries of the states and union territories for expediting the integration of all the portals. It was actually a tedious task involving technological interventions as well as human resources at all levels, and it has been done successfully. I am also thankful to Additional Secretary Telecom and Joint Secretary Telecom for their crucial timely intervention with many states to bring them on board. On behalf of DOT, I would like to express deep appreciation for the overwhelming response from the state and UT governments for attending this conference. The administrative efficiency of departments, post submission of online applications matters most, and this in turn makes departments, states and union territories crucial in digital governance, facilitating ease of doing business. Therefore, we greatly value your presence here as crucial partners of this centralized ROW portal and look up to you with great expectations. I also want to thank the Managing Director, MPSCDC, Shri Naran Kumar, who is present today, for driving the portal development team and his support to the broadband mission team. I take this opportunity to thank the senior officials of COAI, TAIPA, Telecom Service Providers and Infrastructure Providers, and Telecom Service Providers for giving timely feedback and their contributions in improvement of the portal. I am also thankful to the media representatives, DOT field units at LSA levels, and other viewers who are attending this conference in large numbers. The sincere efforts put in by the officials of Broadband Mission, DOT headquarters and DOT are hereby acknowledged for bringing the ROW portal to this fruitful stage and for the successful execution of the event. Thank you all. ROW के लिए किस तरह से देखिए, दो पोर्टल्स हैं। एक पोर्टल है
गतिशक्ति जो आज अभी लॉन्च हुआ, तो किसी को भी अगर ROW लेना है, राइट ऑफ वे लेना है, भारत नेट की केबल लगनी है, किसी BSNL की केबल लगनी है, किसी और की ऑप्टिकल फाइबर लगनी है, राइट, तो उसके लिए सेंट्रलाइज एक पोर्टल हो गया तो 50 जगह जाने की जरूरत है। अब इसका आगे का आप देखिए, डायल बिफोर यू डिग का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। जैसे मान लो एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है, राइट, एक हाईवे से जुड़ती हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही है। वो सड़क जब बन रही है, सड़क बनाने के टाइम में उसको जमीन को हम खोदना चालू करें, उससे पहले अगर अपने को पता चल जाए कि यहाँ पे केबल है, यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर केबल है, तो आप उसमें सावधानी से खोदेंगे और इसका अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे, बराबर है। तो ये जो पोर्टल का नेक्स्ट स्टेप होगा, उसको GIS से जब इंटीग्रेट कर देंगे, तो हर एक राज्य सरकार को, हर एक सड़क बनाने वाली, रेलवे बनाने वाली, नहर खोलने वाली, इन सब एजेंसीज को एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिससे कि वो देख सके कि कहाँ पर ऑलरेडी एक ऑप्टिकल फाइबर है। तो फिर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हो जाती है। मान लो कोई घर भी बना रहा है, राइट, तो घर भी बना रहा है और घर के फाउंडेशन लेने के टाइम में अगर उसको फैसिलिटी मिल जाए चेक करने की, तो किसी का केबल नहीं करेगा, बराबर। ये थॉट प्रोसेस है पूरा राज्यों का सीक्वेंस। मैंने जैसा स्पेशली ताली बजवाई, राज्यों के लिए अप्लॉज करवाया। ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा और इसमें राज्यों का योगदान हुआ। सितंबर के रिफॉर्म्स हुए तो एक टावर की इंस्टॉलेशन के लिए क्लियरेंस वाला विषय आया था उसमें, तो इंडस्ट्री वाले भी बता सकते हैं मेरे ख्याल से उसमें तो इतनी स्पीड हुई है। पहले जो महीने लगते थे सितंबर के रिफॉर्म्स के बाद में, उसमें अब कई बार कुछ दिनों में हो जाता है। और जहाँ पे कोई आसपास एयरपोर्ट नहीं हो, वहाँ तो एक दिन के अंदर काम हो जाता है। Licenses, those things. GatiShakti is for infrastructure. Right of way, everything. Right of way. It's a huge change, and again, I'm complimenting the state governments for the effort they have put in. और नदीम मिश्र साहब की जो आपने शायरी रखी, उसके लिए धन्यवाद आपको। पहला स्टेप तो आज आपने देखा, ये पहले स्टेप में बहुत एफर्ट लगा है, और जितना एफर्ट डिपार्टमेंट का लगा है उससे ज़्यादा राज्य सरकार का है, क्योंकि जब तक हर एक राज्य इस चीज़ को ओन नहीं करे, इस चीज़ को समझे नहीं कि कहाँ पे पिंच होता है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने में, तब तक वो सॉल्यूशन निकलता नहीं है। तो बहुत ही एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन रहा, और एकदम ओपन माइंड के साथ कि चलो एक स्टेट, बिना कोई नाम लिए मैं कहता हूँ कि एक स्टेट में बहुत अच्छा ROW रूल्स है, क्यों ना उसी ROW रूल्स के हिसाब से दूसरे स्टेट्स में भी चेंज किया जाए। तो ये जो माइंडसेट का चेंज है कि भाई एक ओपननेस के साथ देखना, एक खुले दिमाग के साथ देखना कि किसी के पास कोई अच्छी चीज है तो उसको क्यों ना बाकी सब लोग भी कॉपी करें, बाकी सब लोग भी उसी को क्यों ना अडॉप्ट करें। वो एक बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज है। उसके इन सब एफर्ट्स के चलते एक अच्छा स्टेप बना पहला पोर्टल। अब इसको लीगल बैकिंग देने की जरूरत है। जो बात हुई दो स्टेप की, एक लीगल बैकिंग और दूसरा इसका गतिशक्ति पोर्टल, जो एक पूरा जिसमें रेलवे, वाटरवेज, पावर केबल, सभी का हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का उसमें जो जुड़ाव हो रहा है, उसके साथ इसका जुड़ाव। ये दो चीज होने से, टेक्नोलॉजी, माइंडसेट, लीगल बैकिंग, ये होने से मुझे लगता है कि ये 22 दिन वाला जो टाइम फ्रेम है अभी, वो मेरा अंदाजा है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शिफ्ट हो जाएगा। हमारी सोसाइटी क्या है? आपने बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछ लिया। हमारी सोसाइटी क्या है? हमारी सोसाइटी है जो एज ह्यूमन बीइंग्स, एज दिस सोसाइटी, हम लोगों ने अपने लिए कुछ तय किया कि हम ऐसे काम करेंगे, हम इसमें ये पर्टिकुलर एक्शन होगा, तो इस पर्टिकुलर चीज में हम ऐसे आगे बढ़ेंगे, राइट। लीगल बैकिंग से सोसाइटी के जो इनफॉर्मल कंस्ट्रक्ट्स हैं, उन इनफॉर्मल कंस्ट्रक्ट्स और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स को एक फॉर्मेलिटी आया है। ROW रूल्स है, मान लो रूल्स को वायलेट किया, तो उसमें एक्शन क्या है? कोई एक्शन नहीं है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी नहीं आती। अभी केवल एक सदिच्छा के कारण काम होने की बात है, और उसमें फिर लीगल होने से आप
एक मैंडेटरी हो जाता है। इसीलिए सोसाइटी ने इतने सारे रूल्स बनाए, लॉज बनाए। अपनी पूरी ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सिविलाइजेशन में रूल ऑफ लॉ वाला कंस्ट्रक्ट है, वो जरूरी है। लीगल बैकिंग में सबसे फंडामेंटल ये है कि जो हमारे ऑफिसर्स जिनको अप्रूव करना होता है, सभी ऑफिसर्स अप्रूव करते हैं, चाहे तहसीलदार हो, चाहे सब कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कहीं पर भी किसी भी जगह पे, उनको एक एम्पावरमेंट मिलता है लीगल बैकिंग से, राइट? लीगल बैकिंग से उनको एक एम्पावरमेंट मिलता है। लोकल लेवल पर सर, ये तो लोकल लेवल हो गया, तहसीलदार। लोकल लेवल पे ही कह रहा हूँ, काम तो लोकल लेवल पे होता है, काम तो जमीन पे होता है। राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार छोटे छोटे, आप सर अभी फिलहाल बॉटम से की बात कर रहे हैं, तो हम तो जमीन के लोग हैं ना, ठीक। काम तो सारा जमीन पे ही होता है ना, तो उस लेवल पे एक एम्पावरमेंट होता है। दूसरा, फी लगानी है, कितनी लगानी है, उस पर एक क्लैरिटी आती है, राइट? तीसरा, अगर कोई न दे तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कैसे है, ये लीगल बैकिंग। मान लो हाईवे या रेलवे, मैं रेलवे का एग्जाम्पल लेता हूँ। रेलवे में मान लो लाइन के नीचे क्रॉस करने का परमिशन, राइट? अगर कोई DRM या उससे नीचे अगर वो 4 दिन में नहीं देता है परमिशन, राइट, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिर क्या है? अभी ये है कि ठीक है, उनको डांट सकते हो, ये कर सकते हो, फोन करके बोल सकते हो, लेकिन लीगल बैकिंग होने से अकाउंटेबिलिटी है, ये कंसेप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5G रोल आउट इसलिए होगा कि 5G में डेटा का परिमाण, जो डेटा की क्वांटिटी है, डेटा का क्वांटम है, दैट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, दैट विल इंक्रीज मल्टीफोल्ड, यानी फाइबराइजेशन विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आगे आने वाले समय में मतलब बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर लगेगा सब जगह। तो जब फाइबर लगेगा इतनी बड़ी मात्रा में, तो उसके लिए कोई ना कोई राइट ऑफ वे वाली फैसिलिटी शुरू से तैयार कर लेनी चाहिए। इसीलिए इसको बहुत एडवांस में मेहनत करके टीम ने सबने पूरी की पूरी टीम बने, न केवल DOT बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स की, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग इट, वो भी सब सेम टीम है, वन टीम है। तो इन सब ने मेहनत करके ये एडवांस में पोर्टल बना, उसको बहुत इसका। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति नेचर से कुछ नहीं है। अगर हम भारत की संस्कृति चाहे सब चीज़ों को भूल जाएं, धर्म को भूल जाएं, स्टेट्स को भूल जाएं, लैंग्वेजेस को भूल जाएं, जो अपनी मूल संस्कृति है वो नेचर से। नेचर पंचतत्व से है। पंचतत्व जुड़े हुए सारे के सारे आपस के इंटरेक्शन से। वो इंटरेक्शन क्या है? गति और शक्ति। ये एक थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है कि काम अच्छा जल्दी से जल्दी हो, काम में शक्ति से मेहनत करके काम करें, तेजी से काम करें, सबको जोड़ के काम करें, सबको साथ लेके काम करें। ये थॉट प्रोसेस है। PM साहब तो साफ कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास नहीं लगे तब तक कैसे काम होगा? तो इसमें सबके प्रयास की बात। हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक अलग अलग स्पेसिफिक नीड होता है। फॉर्म्स होते हैं, उसके पीछे लॉ होती है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, फी जमा कराने के डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो बेसिकली एक कोड और उसके मल्टीपल डायमेंशंस, ये थॉट प्रोसेस है। तो वो जो कोर है वो बना रहा है बाइसैग, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ सैटेलाइट एप्लीकेशंस एंड गवर्नेंस। तो बाइसैग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेटी का संस्थान है, ये गांधीनगर में स्थित है और सैटेलाइट में बहुत अच्छा काम किया है। मतलब अगर आप उनका काम देखें तो आपको वाकई लगेगा कि हाँ, अपने देश में इतना अच्छा एक काम हुआ है जिस काम को हम एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिला। तो बाइसैग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, भास्कराचार्य को दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट इंटीग्रेशन की, और देश भर में वर्कशॉप्स किए उन्होंने, कई राज्यों के साथ वर्कशॉप्स किए। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें वर्कशॉप के लिए गए थे आधे दिन के हिसाब से, और राज्य सरकार के लोगों को इतना पसंद आया कॉन्सेप्ट और इतना अच्छा लगा कि वहाँ पे 1.5 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन की वर्कशॉप्स एक्सटेंड की। तो ऐसा एग्जाम्पल जनरली होता है कि यार ये चीज आई है, नहीं एक हेडेक, एक नया काम पड़ेगा। इसमें उल्टा है। अच्छा, आप आधे दिन का टाइम मांगते हो, आधे दिन के वर्कशॉप के बाद में लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत काम की चीज है, तो 2-2 दिन देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो यहाँ पे उनका इन्वॉल्वमेंट है भाई साहब। हाँ पूरा है ना, अभी देखो ना आपकी जो नए टावर लगाने का कौन से एरियाज में मिसिंग है, राइट। देश में हमारी तो अंत्योदय की फिलॉसफी है, अंत्योदय की फिलॉसफी में लास्ट पर्सन ऑन दी इन दिस सोसाइटी उसको हमें कवर करना है। तो उसका जो कंप्लीट हमने मैपिंग किया वो गति शक्ति के पोर्टल पे किया। गति शक्ति का जो नेशनल पोर्टल है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के द्वारा कोऑर्डिनेट किया हुआ है, उसमें सारे एग्जिस्टिंग टावर्स की लोकेशन देख ली, ऑलरेडी विलेजेस की लोकेशन उसमें ऑलरेडी है, बीम्स का फॉर्मेशन किस तरह से वो देख मैप कर दिया उस पर, तो पता चल गया कि कौन से गांव अभी भी पेंडिंग है। आई मीन इट बिकम्स सो इजी। मैं आपको जो पोर्ट वाला एग्जांपल दिया रेलवे और पोर्ट की कनेक्टिविटी का, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल। आपके सामने एकदम बिल्कुल विजिबल हो जाता है, तो इतना साफ दिख जाता है कि जहाँ पोर्ट है इतना सा ही तो जोड़ना है। I mean, it becomes so evident and so clear. That's the advantage. That's ये thought process है, thought process का ये advantage। कॉन्सेप्ट में अगर हम जमीन पे जाके सर्वे करें, कंटूर लेंगे, कंटूर मैप पड़ेगा, कहाँ पे पानी का फ्लो आ रहा है, कहाँ पे पानी का फ्लो निकासी हो रही है, राइट। ये सब सोचेंगे तो इट विल टेक मेनी इयर्स टू प्लान। अब आपने गतिशक्ति पोर्टल का सैटेलाइट इमेज ले लिया, सैटेलाइट इमेज में ऑटोमेटिकली कंटूर्स आ गए, तो within few hours you can decide कि ये जगह आपकी पोटेंशियल है। फिर आप उसकी ग्राउंड से कनेक्शन देख लो, ग्राउंड में कोरिलेशन देख लो, लाइफ बिकम्स वेरी लाइक काम करना बहुत आसान हो जाता है, प्लानिंग करना बहुत आसान है। इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कुछ 2-3 वर्षों पहले की बात है, एयरपोर्ट से आ रहा था, उबर ली थी, उबर ये जस्ट कोरोना से पहले की बात है, कोरोना से जस्ट उससे पहले की बात है। उबर लेके घर जा रहा था, तो ऐसे ड्राइवर को पूछा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ड्राइवर ने जो बात कही वो बड़ी एक आश्चर्यजनक बात थी, बनी हुई पॉलिटिकल चर्चा उससे चालू की। तो उसने कहा साहब आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, आप अलग टाइप के मतलब जैसे कहते हैं कि आप अमीर लोग हो, आप एसी में बैठे रहते हो, वैसे वाली बात। और उसके बाद में बोला कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, उसका बेनिफिट अभी आपको दिखे ना दिखे, अगली 2-3 जनरेशन तक लोगों को वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये ड्राइवर बोला था। मुझे बड़ी वो चीज दिमाग में करी। गतिशक्ति का जब आपने प्रश्न पूछा तो मैं ये कहने वाला था आपको कि अभी आपको इमीडिएट इसके बेनिफिट आपको लगेगा, मन में प्रश्न आएंगे, लेकिन इसका जब प्लानिंग में सब लोग उपयोग करने लगेंगे तब इसके जो बेनिफिट्स दिखेंगे ना वो फिनोमिनल बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अपने को बहुत कैचअप करना, अपने को वी आर स्टिल एन इकोनॉमी जिसमें हमको मैराथन दौड़नी है विद द स्पीड ऑफ अ स्प्रिंट, तभी जाके हमारे लोगों के एस्पिरेशंस पूरे होंगे ना। तो इसी प्रयास में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने राज्य सरकारों के साथ मिलके ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने के लिए जो राइट ऑफ वे चाहिए होता है उसको एक इंटीग्रेटेड गतिशक्ति पोर्टल में आज आगे बढ़ाया इस काम को। इस काम में देश में सभी राज्य सरकारों को और जो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हो, चाहे भारत नेट का काम हो, चाहे कोई डेटा सेंटर वाले केबल लगाने वाले हो, हर एक को सबको इसमें बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसका एक स्ट्रेट बेनिफिट आपने देखा कि इंटीग्रेशन से, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज़ करने से जिस काम के लिए पहले 100 दिन से अधिक लगते थे, अब वही राइट ऑफ वे में एवरेज 20-22 दिन लगते हैं। और अभी इस काम को और नेक्स्ट स्टेप इसमें लेंगे, राइट ऑफ वे के लिए एक लीगल बैकिंग लेके आएंगे, प्लस इसको जो गतिशक्ति का पोर्टल है और दूसरे जितने भी रेलवे के पोर्टल हो गए, हाईवे के पोर्टल्स हो गए, इन सबको एक साथ गतिशक्ति पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो उसमें हमारी अपेक्षा है कि इससे जो 22 दिन 20 दिन लगते हैं वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर परमिशन हो जाए। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आगे जैसे भारत नेट का काम है या 5G का रोल आउट होगा, इन दोनों में ऑप्टिकल फाइबर केबल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस भूमिका में ROW ठीक मिलने से, ठीक टाइम पे मिलने से दोनों कामों में गति आएगी।